बेस्ट एयरपोर्ट्स के वीडियो तो सबने देखे होंगे। सिंगापुर चांजी, दोहा, दुबई। लग्जरी, परफेक्शन और एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस। पर आज हम बात करने वाले हैं उस दूसरी साइड की, जहां पेशेंस टेस्ट होता है और ट्रैवल का मजा हॉरर स्टोरी बन जाता है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू 36,000 फीट। आज का टॉपिक थोड़ा हटके है। टॉप 10 वर्स्ट एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड। यहाँ आपको मिलेंगे वो एयरपोर्ट्स जहां ट्रैवलर्स कहते हैं बस यहाँ से निकलने दो। From messy terminals and route staff to missing luggage and delays everywhere, we are counting down the 10 airports you'll definitely want to avoid. So, without further ado, let's cruise. Kicking off a list at number 10 is Sharm el Sheikh International Airport. लोग कहते हैं कि ये एक गेटवे टू इजिप्ट स्टनिंग बीचेस है, बट इट फील्स मोर लाइक अ स्ट्रेस दैन अ स्टार्ट ऑफ अ वेकेशन। ये एयरपोर्ट फेमस है अपने लॉन्ग क्यूज, ओवरक्राउडेड टर्मिनल्स एंड पेनफुली स्लो सिक्योरिटी चेक्स के लिए, स्पेशली पीक हॉलिडे सीजन के वक्त। Travelers complain करते हैं about scenes of confusion, poor air conditioning, and unclear signage that leaves you wandering around just to find your gate. Baggage delays यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है। Luggage from multiple flights often piles up together, जो एक कन्वेयर बेल्ट एरिया को एक बड़े chaos में बदल देता है। And when delays happen, announcements are either missing or barely audible. In short, it's a sunburned traveler's nightmare. So अगर आप यहाँ से फ्लाइट ले रहे हैं या बुक करने वाले हैं, arrive extra early, pack patience, and keep your essentials in carry-on. Because while the Red Sea is calm and beautiful, this airport is anything but the same. Number 9 pe we have Noi Bai International Airport in Hanoi, a place where efficiency often loses the battle against overcrowding. As Vietnam's capital grows rapidly, this airport struggles to keep up. Travelers frequently report करते हैं massive immigration lines, confusing layouts and long waits for the baggage जो कि एक घंटे भी हो सकती है. During peak hours, check-in counters jam-packed हो जाते हैं with frustrated passengers trying to figure out where to stand while announcements echo vaguely throughout the terminal. यहाँ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टर्मिनल्स अलग-अलग हैं और साइनेज बिल्कुल भी क्लियर नहीं है. So first-time visitors often find themselves wandering in circles trying to locate their gate. Add in flight delays, language barriers, and limited seating और ये chaos endless सा feel हो जाता है. So अगर आप हनोई से फ्लाइट ले रहे हैं, patience is again your best carry-on because while the city is full of charm and history, its airport still feels stuck in transit. नंबर 8 ऑन अ लिस्ट हमें ले जाता है सनी कोस्ट ऑफ टर्की पे डालमन एयरपोर्ट, जो कि बाहर से बहुत मॉडर्न लगता है, बट स्टेप इनसाइड ड्यूरिंग पीक टूरिस्ट सीजन एंड इट्स प्योर क्योस. इमेजिन करिए हंड्रेड्स ऑफ हॉलिडे मेकर्स एक लंबी नेवर एंडिंग लाइन में खड़े हैं, सिक्योरिटी चेक्स जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, एंड स्टाफ ट्राइंग ऑफन अनसक्सेसफुली टू कीप टेम्पर्स काम. The terminals echo with announcements overlapping in different languages, जबकि कंफ्यूज पैसेंजर्स एक काउंटर से दूसरे काउंटर पे भागते हुए नजर आते हैं ड्यू टू लास्ट मिनट गेट चेंजेस. बहुत से ट्रैवलर्स बोलते हैं दैट दिस एयरपोर्ट फील डिसऑर्गेनाइज्ड एंड अंडरस्टाफ्ड विद लिमिटेड सीटिंग एंड ओवरप्राइस्ड फूड ऑप्शंस एडिंग टू द फ्रस्ट्रेशन. जब आप फाइनली अपने गेट पर पहुंचते हैं, यू आर ऑलरेडी एग्जॉस्टेड बिफोर द फ्लाइट इवन टेक्स ऑफ. So if your dream vacation starts at Dalaman, brace yourself. The chaos begins long before you hit the beach. नंबर 7 पे है लिस्बन हम्बर्टो डेलगाडो एयरपोर्ट, पोर्चुगल्स बिजिएस्ट गेटवे एंड अनफॉर्चुनेटली यूरोप का मोस्ट chaotic ट्रैवल हब. ये नंबर ऑफ पैसेंजर्स लोड के हिसाब से साइज में बहुत छोटा है और ये आपको रियलाइज हो जाता है द मोमेंट यू एंटर. सिक्योरिटी लाइन स्ट्रेच एंडलेसली, चेक इन काउंटर्स की लाइन वॉकिंग एरियाज तक आती हैं. ट्रैवलर्स कंप्लेन करते हैं अबाउट पुअर वेंटिलेशन, lack of seating and messy passenger flow, especially during summer season. यहाँ पर इवन फ्लाइट इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि लास्ट मिनट गेट चेंजेस यहाँ बहुत कॉमन है दैट आरंट अनाउंस्ड प्रॉपर्ली, लीविंग कंफ्यूज्ड ट्रैवलर्स स्प्रिंटिंग अक्रॉस टर्मिनल्स. स्टाफ दो पोलाइट है, बट दे सीम ओवरवेल्म्ड बाय द नॉन स्टॉप रश. लिस्बन जाना जाता है फॉर इट्स काम चार्म एंड पेस्टल सनसेट्स, बट एयरपोर्ट के अंदर इट्स अ स्टॉर्म ऑफ क्यूज, कंफ्यूजन एंड chaos.
एट नंबर 6 वी आर बैक इन टर्की और इस बार बात करेंगे अंटालिया एयरपोर्ट की। ऑन पेपर ये टर्की के मोस्ट इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स में से एक है। इन रियलिटी ड्यूरिंग समर ये एक ओवरक्राउडेड मार्केट की तरह नजर आता है। ओवरफ्लो चेक इन काउंटर्स, जैम अप बैगेज बेल्ट्स एंड एयर कंडीशनिंग जो स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट द हीट। Travelers complain करते हैं standing for hours with children crying, trolleys crashing and announcements echoing in half a dozen languages. डिलेज यहाँ पेनफुली बहुत कॉमन है और एक क्वाइट कॉर्नर ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इवन सिंपल चीजें लाइक वॉशरूम्स और फूड कियोस्क में भी लंबी लाइंस मिलती है। स्टाफ ट्राई टू कीप अप बट द कियोस्क ऑफन विंस। सो इफ योर फ्लाइट इज थ्रू अंटालिया इन जुलाई और अगस्त, गुड लक। आपको सनस्क्रीन से ज्यादा पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। क्रैकिंग इनटू अ टॉप 5 इज हुरगाडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां कियोस्क आपके टेक ऑफ से बहुत पहले मिल जाता है। ये एयरपोर्ट्स मिलियन ऑफ टूरिस्ट को सर्व करता है एवरी ईयर, बट स्टेप इनसाइड और आपको इंस्टेंटली प्रेशर फील होने लगेगा। क्राउडेड टर्मिनल्स, स्वेटी एयर, कंफ्यूजिंग लाइंस एंड एन ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। ट्रैवलर्स यहाँ से फ्लाइट लेने को एक नाइटमेयर से कम नहीं समझते हैं। बैगेज क्लेम आपके पेशेंस को पूरी तरह से टेस्ट कर लेगा। कन्वेयर बेल्ट स्टॉप मिडवे, luggage randomly pile up हो जाता है and announcements are either in a language you don't understand or not made at all. And if you think departure arrival से कुछ better होगा, think again. Expect long queues at the passport control, missing staff and last minute gate changes. Hurghada आपको crystal clear beaches तो promise करता है, but its airport is a sandstorm of confusion you won't forget anytime soon. नंबर 4 पे है हेराक्लियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन ग्रीस। एक एयरपोर्ट जो कि एक बैटलफील्ड ज्यादा और गेटवे टू पैराडाइज कम लगता है। ये एयरपोर्ट लोकेटेड है ऑन द ब्यूटीफुल आइलैंड ऑफ क्रेट और हैंडल करता है मिलियंस ऑफ पैसेंजर्स एवरी ईयर। बट सैडली ये काम करता है ऑन एन इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि 1980s का लगता है। The moment you walk in, you will notice overcrowded terminals, noisy waiting halls, and queues that seem to never end. Air conditioning? Barely there. Sitting? Almost non existent. Travelers often complain करते हैं about the sticky floors, poor signage, और staff जो कि passengers के जितने ही exhausted नजर आते हैं। During peak summer, ये एक human traffic jam में बदल जाता है, with tourists standing shoulder to shoulder, sweating and confused. Baggage claim and security checks are another story. Slow, uncoordinated and painfully understaffed. बहुत से passengers ने यहाँ से अपनी flights miss की हैं just because of poor coordination. So yes, Crete might be heaven on earth, but Heraklion Airport, it's the long, painful queue you have to survive to reach the heaven. नंबर 3 पे हम चलते हैं हो चिन मिन सिटी। वेलकम टू तान सॉन नाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वियतनाम का busiest and let's say just the most unorganized airport. The moment you step in, you'll feel it. The heat, noise and the crowd एक साथ आपको हिट करता है। Imagine करो hundreds of passengers dragging trolleys, rushing in every direction and airport staff shouting instructions जो कि आप सुन भी नहीं पा रहे हो। Long security lines, endless queues and confusing announcements यहाँ का डेली रूटीन है। तानसानाथ इतने सारे ट्रैवलर्स को हैंडल करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। What you get now is overcrowded terminals, barely functioning air conditioning and a baggage claim that looks like a free for all shop. बहुत से ट्रैवलर्स बताते हैं कि यहाँ अपना बैग ढूंढ लेना किसी लॉटरी जीतने से कम नहीं है। Tansannath is like the wild side of travel. It's not for the faint-hearted. So if you survive this airport without losing your patience, congratulations. You have earned your traveler's badge of honor. Second spot इस लिस्ट में मिलता है रोड्स डियागोरस एयरपोर्ट को, अ प्लेस जहाँ पैराडाइज मिलता है प्योर ट्रैवल chaos से। रोड्स ग्रीस का मोस्ट लव्ड हॉलिडे डेस्टिनेशन है। Stunning beaches, rich history and picture perfect sunsets. But the moment you step into its airport, it's like all that beauty fades behind a cloud of confusion. Travelers इसको एक vacation nightmare बोलते हैं। Endless queues, zero air conditioning, and terminals so packed आप barely अपना luggage crowd के through move कर पाएंगे. During the summer rush, it feels like the entire island is trying to leave at once. परेशानी और बढ़ाने के लिए flight delays यहाँ बहुत regular और common है. And the loud echoing announcements only add to the frustration.
Imagine leaving a dreamy Greek beach only to end up sweating, standing, and stressing inside a noisy, overcrowded box. That's road Diagras for you. It's where your perfect holiday ends with an airport meltdown. So next time अगर आप Greek getaway plan करें, enjoy roads, but brace yourself for its airport. आपको पेशेंस, एक वाटर बॉटल और नर्व्स ऑफ स्टील की जरूरत पड़ेगी टू मेक इट थ्रू. And finally, taking the crown for the worst airport experience in the world, आपका स्वागत है ट्यूनिस कारथेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्यूनिशिया में. बाहर से बहुत प्रॉमिसिंग लगता है, मॉडर्न स्ट्रक्चर, हिस्टोरिक नेम, ग्रेट लोकेशन. बट जैसे ही आप अंदर जाते हैं, everything falls apart. Endless queues that barely move, grumpy staff, dirty restrooms, and a level of disorganization that defies logic. पैसेंजर्स इसको एक बुरे सपने की तरह बोलते हैं. लॉस्ट बैगेज डम्प्ड ऑन द फ्लोर, सिक्योरिटी स्टाफ yelling without clear instructions, and custom lines that take over an hour just to move a few feet. यहाँ लगभग कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है अगर आपकी फ्लाइट डिलेड है तो, and when they are, which is often, there's nowhere clean or comfortable sitting area to wait. Some travelers even claim staff अपने फोन में ज्यादा इंटरेस्टेड लगता है rather than helping passengers. Complaints about rude behavior, complete lack of professionalism हर साल ट्रैवल रिव्यू साइट पर नजर आते हैं. सो यस, ट्यूनिस कार्थेज एयरपोर्ट सिर्फ आपका पेशेंस टेस्ट नहीं करता, इट ब्रेक्स इट. आप यहाँ अपनी ट्रिप की एक्साइटमेंट के साथ आते हैं और जाते हैं जस्ट प्रेइंग टू नेवर हैव टू कम बैक. And that's why Tunis Carthage Airport takes the number one spot. Not just for poor service or cleanliness, but for turning travel into an endurance challenge. So that was it. The countdown for the 10 worst airports right now, ranked by passenger experience for the problem travelers actually hate: chaos, delays, lost bags, dirty facilities, long queues, and poor staff info. हमने लेटेस्ट ट्रैवलर बेस्ड ग्लोबल रैंकिंग को यूज किया है टू मेक दिस लिस्ट. आप इनमें से कौन से एयरपोर्ट पे फंसे हैं? ड्रॉप योर वर्स्ट एयरपोर्ट स्टोरी इन द कमेंट्स. If this helped you, hit like, subscribe, and turn on the bell icon. Travel safe, stay calm in the chaos, and until next time, it's bye bye.